एम आई ऑडिबल? ठीक है, मैं बाहर। हेलो हेलो हेलो, सुनाई देता है सुमन? अभी कोई को नहीं हो रहा है ना? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो हाँ, अभी आ रहा है। सर, हमारा बात है तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कुछ बताइए। हेलो 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 हेलो। Hello, sir. Are you audible? Am I audible, sir? Hello. अभी उसके लिए हेल्प छोटा वाला
Hello. Ladies and gentlemen, esteemed guests, faculty members, and our bright participants, a very good morning to all of you. We are gathered here today for a momentous occasion, the Skill Development Program on Assistant Mine Surveyor course right here at prestigious DDLT IIT ISM Dhanbad. Now let's begin this auspicious event by welcoming our distinguished dignitaries. I invite our respected guests and faculty members to join us on the stage for the lamp lighting ceremony, a symbol of knowledge and enlightenment. Please welcome respected Director, Professor J.K. Patanayak, respected Deputy Director, Dhiraj Kumar, and our guests and participants. Thank you very much for illuminating our path today. Set the tone for the day. Let's hear from our head of the department, CD, Professor P.S. Paul. Please, sir. Respected Professor J.K. Patanayak, our Honorable Director of the Institute, Chief Guest, Sri L.K. Ramaiah, Director Personnel, PCCL Dhanbad, Professor Dhiraj Kumar, Deputy Director of the Institute, Professor Alok Kumar Das, Chief IIT of the Institute, and Dr. Sunil Kumar, Coordinator of the Skill Development Program, and my colleague of the dais, and dear participant, news media, ladies and gentlemen, at the outset, head of department of the Department of Mining Engineering, one welcomes all the participants to the overall function of this skill development program on assistant mine surveyor course, organized by the Department of Mining Engineering under the mentorship of Professor Dhiraj Kumar and Dr. Sunil Kumar. So, my dear participant, if I come to the sustainable development of the system, sustainable development of the organization, sustainable development of the country,
for keeping in view of this sustainable development of the United States, United Nations passed a bill with having a 16 goal. One of the important goal is the youth skill development and job opportunity. Keeping in view of this, our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi sir launched a skill development program in the World Youth Skill Day, 15 July 2015. In the same day, in the next year, 2016, the cabinet passed 12,000 crore rupees to skill the 12,000, 1 crore youth, so that they will get the opportunity of the job, not only to the country, of our country, India, but also abroad. Because you know that there are so many jobs are opening there in Canada and Australia, and the country is lagging behind the manpower. But they require the skilled manpower. So the opportunity, if you are just a skilled you and sincerely listen, follow the course that will be you're undertaken by the Department of Mining Engineering and the mine serving section. So it will make your skill enough to compete not only to the country, but also to the abroad. Okay. So this is the second series of skill development program that is organizing by the serving section of the Department of Mining Engineering. And now coming to the department, this department started journey in the year of 1926, in the inception of the institute, along with the Department of Applied Geology, and the name was ISMAG. And thereafter, the name has been changed to Indian School of Mines, and then now it is uplifted to IIT ISM Dhanbad in the year of 2016. The department is offering BTech in mining engineering, and MTech in your three disciplines: MTech in mining engineering, MTech in tunneling and aerospace technology, MTech in geomatics, along with one executive MTech program in geomatics. Okay, so the department is having a very your renowned laboratory, particularly the mine serving laboratory. You will find all the precise equipment worldwide that is available in the world-class institute that you will find over here in the mine serving laboratory. In addition to that, we are having a very developed mine ventilation and environment laboratory, mine rock mechanics laboratory, and the rock excavation laboratory, and few research and teaching laboratory like rock engineering laboratory, CAMPAT laboratory, occupational health safety and ergonomics laboratory, and we are virtual reality laboratory we are developing. So it is requested from the department to all the participants to not only to stick to visit in the mine serving laboratory, you will be there on, but you must visit to the other laboratory so that your exposure will be increased. So with these few words, once again, I welcome all the participants to this skill development program and for your future benefit. Thank you all. Thank you, Professor Paul, for your insightful words. Now I want to invite Dr. Sunil Kumar for the bouquet distribution. Firstly, to our guest, Sri Murali Kumar Ramaiya, Director, Personnel, BCCL Dhanbad. And to our Respected Director, Professor J.K. Patnaik. And to our respected Deputy Director, Professor Dheeraj Kumar. And Professor Alok Kumar Das, IEEE, IIT ISM Dhanbad. And our head of the department, CED, Professor P.S. Paul. Thank you so much. Now let's hear about innovation and entrepreneurship at IIT ISM Dhanbad from our Dean, Professor Alok Kumar Das.
respected dignitaries in the dais, and our guest who is online, Sri Mahendra Payal, Senior Program Officer, dear participant, and my colleagues. I extend my warm welcome to each of you in the inaugural ceremony of Assistant Mine Surveyor course, which is a part of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna 4.0. Today, I would like to highlight the significance of three pillars: innovation, incubation, and entrepreneurship, which stands on the foundation of skill or our expertise. These pillars are cornerstone for the progress of our nation. Therefore, our government places great emphasis on skill development. Skills enable us to identify gaps or shortcomings in the existing technology and sparking new ideas. The transformation of these ideas into reality is known as innovation. Subsequently, incubation and entrepreneurship play crucial roles in bringing innovative products to the market. Here at IIT ISM, we offer comprehensive support, mentorship, and resources to convert innovative ideas into tangible products. Our various centers, including NVCTI, CIIE, TaxMe, and ACIC, contribute to this mission. I encourage you all participants to explore these centers, particularly the Atal Community Innovation Center, ACIC. I extend my congratulations to Dr. Sunil Kumar, coordinator of this program, for successfully organizing this course for the first batch and receiving an overwhelming response for the second batch. At last, I request you all participants, please participate sincerely and without missing any classes. It may the turning point of your life and of course of your family. Thank you so much. Thank you, Professor Das, for sharing your wisdom. Ladies and gentlemen, I'm delighted to invite Deputy Director, Professor Dheeraj Kumar, and to grace the stage for the inaugural address of our skill development program. Thank you, Nisha. Our chief guest, respected chief guest of this occasion, Sri Murli Krishnaji, Director Personnel, BCCL, Professor J.K. Patnaik, the Director of this Institute, who is presiding over this function, Dean IIE, Professor R.K. Das, Head of Department, Professor P.S. Paul, the Program Coordinator, Dr. Sunil Kumar, my senior faculty colleagues, Professor Binay Dayal, Professor Murthy, Professor Ashok Kumar, the technical officers, and my dear participants, and who are physically present in this particular GCLT, and one of my guests is present in online, Mahendra Payal Singh Ji. I welcome you all to this particular second inaugural session of PMKVY 4.0 program on Assistant Mine Surveyor. This GCLT witnessed the inaugural session of the first batch, and successfully we completed the program for the first batch, and is the first IIT which took a lead when we were given under the mission, we were given the targets to train 300 executives or 300 officers or 300 personals on a specific discipline of mine surveying to improve their employability skill from the rural livelihood areas. We successfully completed the first batch. The second batch is onboarded today. If you talk about the importance of this particular program, you will just come to know from your seniors, the first batch graduates, how far they have been successfully getting benefited from this particular program. इस प्रोग्राम से उन्होंने बहुत अच्छा सीखा है. हमारे सर्विंग सेक्शन में डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमने दिया है हमारे बच्चों को और इनकी एम्प्लॉयबिलिटी सर्टेनली बढ़ी है. उसमें से जहां तक मुझे पता चला है कि 40+% बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस हो चुके हैं.
कुछ तो अपने ISM में प्लेस हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में, कुछ डिफरेंट कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं। और जो कंटेंट है, कोर्स का जो कंटेंट है, ये कोर्स का कंटेंट इज द सेम कंटेंट एट दैट ऑफ व्हाट वी टीच फॉर आवर एग्जीक्यूटिव्स हु अंडरगो फॉर द 6 week ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस कैंपस ऑन द सेम सब्जेक्ट, द सेम सर्वेइंग लेबोरेटरी। तो आपको तो बेसिक से लेके एडवांस सर्विंग टेक्नोलॉजीज पे पूरी ट्रेनिंग मिलेगी इस 3 महीने के प्रोग्राम में। बट एक चीज का जो रिक्वायरमेंट है, आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क लगेगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हम एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक पे हम अपने एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करेंगे, उसी इंस्ट्रूमेंट, उसी टॉपिक, उसी मेथोलॉजी पे आपको भी ट्रेन करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव जो आते हैं, उनके एक्सपीरियंस, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, किसी के 20 साल का एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड में, और आप फ्रेश हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर फ्रेश यंग माइंड्स, बट आपकी लर्निंग रिसेप्शन बहुत ही स्ट्रांग होगी, उनकी लर्निंग रिसेप्शन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि ये सेकेंड सीरीज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये भी बहुत ही फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। और हमारे जो डेडिकेटेड सर्वे ऑफिसर्स हैं BCCL के या आसपास के जो ऑफिसर्स हैं, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है, दे विल कम एंड दे विल डिलीवर देयर बेस्ट inputs to you. Other than that, we have our own faculty colleagues, we have our own officers, they will also deliver their contents. I'm also mine प्रोफेशनल सर्विंग प्रोफेशनल, मैं भी आपका क्लास लूंगा ही। आई एम ऑल्सो द इंचार्ज ऑफ माइन सर्विंग लेबोरेटरी, तो आई विल गिव माई ओन इनपुट्स टू यू ऑल। तो आई होप दिस प्रोग्राम विल बी certainly enriching and fruitful for all of you. My best of wishes to you all. And in this particular hall, I am also seeing there are certain participants who have already completed the first batch of PMKVY 4.0 on the training of assistant mine surveyor. इनकी दीक्षांत समारोह तो हो चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने फर्स्ट PMKVY 4.0 का फर्स्ट कन्वोकेशन में इनको सर्टिफिकेट्स तो प्रदान कर दिए हैं। हमारे यहाँ से भी फिजिकली सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों को बुलाया गया था। हर जितने भी कौशल विकास केंद्र है, हर कौशल विकास केंद्र से 1-2 लोगों को चुना गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया था उनकी प्रेजेंस में। तो हमारे यहाँ से भी लोग जा चुके हैं, बट आज इस हॉल में कुछ और सर्टिफिकेट्स बटेंगे, जिसमें कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, एज ए रिसोर्स पर्सनल काम किए हैं फर्स्ट प्रोग्राम में, कुछ प्रतिभागी भी हैं, उनको भी सर्टिफिकेट आज प्रदान की जाएगी। तो मेरी ओर से उन सभी को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. At this point, I cordially invite our respected director, Professor J.K. Patnaik, to grace the stage and share your esteemed insights. Thank you. Thank you, Nijum. Good morning to all of you. Our chief guest of the function today, Sri Murli Krishna Ramaya ji, Professor Dheeraj Kumar, Professor Alok Das, Professor P.S. Paul, Sunil Kumar ji, Professor Murthy, Professor Vinay Dayal, Professor Ashok Kumar, and I came to know that Sri Mahendra Payal is with us, means online he is with us. So, and my dear participants, I welcome all of you to this institute on behalf of the institute. ये मुझे जानकर खुशी हुई कि ये सेकेंड बैच है असिस्टेंट माइन सर्वेयर कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत ये सेकेंड कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इट इज फॉर से स्किल डेवलपमेंट। मैं तो माइनिंग का नहीं हूं, तो इसीलिए सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के बारे में बोलूंगा। बट स्किल ऐसा होता है, इसको जितना टाइम हम लोग डेवलप करने के लिए कोशिश करेंगे,
उतना बाद हम लोग डेवलप कर पाएंगे। स्किल नीड्स टू बी डेवलप्ड। आप जितना भी स्किल इनहेरिट करेंगे, इसको जितना बार आप इसी टाइप का प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वो स्किल डेवलप होता रहेगा। सो प्रायर टू कमिंग टू दिस माइंड सर्वे कोर्स, आज सुबह मीन्स फॉर लास्ट fortnight, all of us we were just going through this Silkara Uttarkasi tunnel collapse. हम लोग सबको मालूम है सिलकारा में क्या हुआ, 17 दिन तक कैसा हमारा जितने वहां पे हमारा वर्कर्स थे, दे गॉट ट्रैप्ड। किस लिए ये ट्रैप हुए उसके ऊपर, उसका रीजन के ऊपर हम लोग तर्जमा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीजें पेपर में उभर के आया है कि वो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस हुआ है, बहुत सारा जो इश्यूज था उसको इग्नोर कर दिया गया था, ये एक प्राइवेट कंपनी उसको वो टनल को बना रहा था, बहुत सारे रीजंस है। हम लोग वो रीजंस के ऊपर नहीं जाएंगे, बट आई जस्ट ब्रिंग योर अटेंशन टू द लास्ट पार्ट व्हिच वाज रियली वेरी interesting. And yesterday's Economic Times heading was the headline was like this. I'll just quote that headline. It was so interesting. वो headline ऐसा ही था, when modern machinery fails, controversial rat hole mining comes to rescue. स्किल जब हम लोग बोलते हैं, ये सिर्फ मॉडर्न टेक्निक के साथ स्किल कभी जुड़ता नहीं है। मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए 15 दिन तक, आई एम सेइंग अबाउट द 16th डेज ऑपरेशन, 16वां दिन का जो ऑपरेशन था, उस दिन मॉडर्न टेक्निक फेल हो गया। मॉडर्न टेक्निक फेल हो जाने के बाद जो काम में आया वो रैट होल माइनिंग प्रोसीडियर। रैट होल माइनिंग प्रोसीडियर क्या है, ये शायद बहुत सारे आप लोग पढ़े होंगे। इतना प्रिमिटिव है, इतना ट्रेडिशनल है, जिसको सरकार ने बंद कर दिया है। अभी रैट होल माइनिंग का प्रैक्टिस है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अभी हम लोग सब एडमिट किए कि ये भी एक स्किल होता है, ये स्किल का भी जरूरत पड़ सकता है, और ऐसा सिचुएशन में ये स्किल का जरूरत पड़ा, अगर ये स्किल नहीं हमारे पास होता, शायद मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंप्लीटली फेल हो जाता। यही इसी को स्किल बोला जाता है। सो जब हम लोग स्किल के बारे में बातचीत करते हैं, तब हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा सोच को मोड़ लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज के साथ सर्वेइंग का बड़ा दूर दूर का रिश्ता है, और आप लोग तो सब न्यू कमर्स हैं। जो पहला मुझे पता चला है कि फर्स्ट बैच का देयर आर सम पार्टिसिपेंट्स आल्सो दे आर प्रेजेंट हियर। मैं वो उसी टाइम में भी उनका इनॉग्रेशन कोर्स में मैं खुद ही था, और मैंने देखा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, ऑन एन एवरेज, मैं बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज एज ग्रुप वाज 35+। लेकिन मैं आप लोगों का सब अभी फेस देख रहा हूँ, आप लोगों का एवरेज एज होगा, इट वुड बी अराउंड 25। सो देयर इज ए गैप ऑफ 10 years इन पार्टिसिपेशन। जैसा धीरज जी अभी बोल रहे थे, जिनके पास एवरेज एज 35 years होता है, उनके पास तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। जिनके पास 25 years होता है, उनके पास एक्सेप्टेबिलिटी, रिसेप्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों के पास वो रिसेप्टिव कैपेसिटी है। और अबाउट दिस माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैं आप लोगों को ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे संस्थान में बहुत दिन तक आप लोग रहेंगे अभी, और जितना दिन तक रहेंगे आप इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलेगा। शायद आप लोग बहुत मेनी ऑफ यू मस्ट हैव कम टू दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन जो मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं उनको मालूम हुआ होगा हमारा देश का सबसे अच्छा माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस संस्थान में है। और बहुत सारा वर्ल्ड वाइड रैंकिंग होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, इसमें हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बड़ा नाम है। रैंकिंग वाइज जो हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर ही रहते हैं विश्व स्तर में।
So I think there is no doubt about the quantum of skill that would be given for surveying activities would be quite phenomenal. बहुत बढ़िया होगा, आप लोगों को बहुत सारा जानकारी भी मिलेगा और इतना एक्सपीरियंस है, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लोग इतना एक्सपीरियंस्ड है, they would be trying to give you the best, and I understand that ये आपका एक बार इस टाइप का कोर्स के साथ आप जब रूबरू हो जाएंगे, आपको कम से कम एक एम्प्लॉयमेंट का साधन मिल जाएगा, and this skill would be leading you to come out as a leading professional in near future. With these few words, I welcome all of you to this second course on assistant mines surveying, and आप लोग ये कोर्स को पढ़ने का टाइम में थोड़ा सा आप लोग यंग हैं, शायद बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगा, ऐसा समय आएगा, बट ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू लिसन टू योर इंस्ट्रक्टर्स, ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स। ये लाइफ टाइम का एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी को आप लोग यूटिलाइज करिए और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। सो गिव योर 100% कंसंट्रेशन, ट्राई टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करिए और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, आप अगर इसको यूटिलाइज करिएगा, employment would never be a problem to any of you. With these few words, I welcome all of you once again to my institution. Thank you all. Thank you so much, sir, for your inspiring words. We are honored to have with us today Sri Murli Krishna Ramaiya, Director of BCCL Dhanbad. Let's welcome him to share the inaugural address. Good morning. I said good morning. Thank you. Professor Patnaik, dignitaries on the dais and off the dais. First batch, second batch, assistant mine surveyors. I have learned in my life, fashion which was very primitive, conservative, and we were told that ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने वो डिसाइड करके किया कि ये होने से ठीक होता है, ये होने से ठीक नहीं होता है। अब मैंने करीब 35 साल इंडस्ट्री में बिताया, तो 35 साल बिताने के बाद मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर पूरा सार अगर मैं 35 साल का बोलूं, तो आपने ये तीरंदाजी की कंपटीशन देखा है, आर्चरी कंपटीशन, उसमें एक जगह होती है, उसको बोलते हैं बुल्स आई, जहां पर तीर मारते हैं। उसका जो सेंटर होता है बीच वाला, that gives you 10 points. Next gives you 9 and next gives you 8. जिंदगी में याद रखना कि वो जो सेंटर पॉइंट है, that is must know. Must know. You must know. अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, you must know all the techniques of mining surveys. उसके बाद का सेकेंड वाला जो सर्कल होता है, that is called as should know. You should know what are the mining techniques in Brazil, Australia, कहां पर क्या क्या है related to mining, related to your subject. और लास्ट वाला होता है nice to know. अगर वो जानते हैं तब भी ठीक है, नहीं जानते तब भी ठीक है, but that is nice to know. Unfortunately, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है आज का जनरेशन is focusing more on the nice to know part. Kindly come out of the syndrome. ये मेरा एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग माय सन। मैं अपने बेटे को देखकर ही बोलता हूँ, उससे अगर आप पूछेंगे फलाना क्या है, 2 मिनट में गूगल करके मेरे को बता देगा व्हाट इज दैट। बट आप अगर बोलेंगे एक न्यूरो सर्जरी करना है एंड नाइस टू नो जो आदमी है उसको बोलेंगे आप न्यूरो सर्जरी करिए, तो ही कैन नॉट डू इट। जैसे हम बता रहे हैं, हियर कम्स द स्किल पार्ट व्हिच प्रोफेसर पटनायक हैज सेड। आपका मॉडर्न टेक्निक्स व्हेन इट फेल्ड, the primitive and the most deadly rat hole mining that has come to a rescue of those miners who were trapped.
और एक लाइन बोलूंगा कि एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट व्हाट यू मेक ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू। अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाते हैं जाते वक्त पहली बार, दैट इज एन एक्सपीरियंस। दूसरी बार उसी गड्ढे में गिरते हैं, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस। तीसरी बार अगर उसी गड्ढे में गिरते हैं, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट लेवल में बोलता हूं कि अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक गड्ढा है और आपका दोस्त रात को जा रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए ये बोलने के लिए, बेटा तुम अगर वहां से जा रहे हो, देखना वहां पर एक गड्ढा है, बच के चलना। आपको दूसरी बार पैर तुड़वाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका पैर टूटा है तो आप यू शुड बी अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स। ये प्रोफेसर साहब ने बोला कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसा लगता है यार छोड़ नहीं करेंगे। अभी हम लोग इन बीसीसीएल वी आर एनएसडीसी के साथ में हम लोग स्किल का डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं हमारे बेलघोरिया में। अब क्या होता है, पीपल फील दैट कि मेरे को इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एक स्किल सेट गैदर कीजिए, एक स्किल लीजिए, लेने के बाद देखिएगा कि आपका टाइम आएगा। आप ये असिस्टेंट माइनिंग सर्वेयर का प्रोग्राम कर रहे हैं, काइंडली डू इट वेरी रिलीजियसली, फोकस करिए। खराब लगेगा, बाएं हाथ में मोबाइल लेकर दाहिने हाथ से खाना खाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब रोटी खत्म हो गई, और आपको आपका पेट को भी पता नहीं चलेगा कि अब रोटी खत्म हो गई। काइंडली डू नॉट डू दैट। मैं एचआर वाला आदमी हूं, मैं एचआर की बात करता हूं कि देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टाइम। इफ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों मिलकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर बोलते हैं भगवान को, भगवान मेरे को 1 मिनट की लाइफ वापस दे दो, दे कैन नॉट गेट इट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट मनी, इट इज टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो यू आर ए किंग। अगर वो टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो यू आर एन एम्परर। अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो एक जो भिखारी होता है उससे भी खराब हालत है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एयरपोर्ट पर मैं वेट कर रहा हूं एक फ्लाइट के लिए, तो मैंने देखा है कि लोग एयरपोर्ट के अंदर घुसे, सिक्योरिटी चेक होने के बाद मोबाइल में जो मुंडी घुसाए, उसके बाद एक आदमी आके हिला के पूछता है कि सर आप ये बॉम्बे वाली फ्लाइट में जा रहे हैं? उनको मालूम ही नहीं है। 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे मतलब हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड, हाउ मेनी पीपल हैव टेकन बर्थ। आप अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आज सोच के देखिए, अभी इस वक्त हिथ्रो एयरपोर्ट में कितने प्लेन्स लैंड कर रहे होंगे। आज इस वक्त धनबाद रेलवे स्टेशन में कितने लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। आज इस वक्त सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में कितने लोग घुस रहे होंगे, कितने लोग निकल रहे होंगे। आज इस वक्त, अगर आपको आज इस वक्त अगर कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिएगा, आपकी लाइफ वैल्यूबल हो जाएगी। तब पता चलेगा कि हम लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारी जिंदगी का। मुझे ऐसा लगता है, मैंने परसों ज्वाइन किया था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, और 35 साल 3 सेकंड में उड़ गए। और मैं आज जब बात कर रहा हूं, मैं इसलिए आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई कैन टेक अ सेशन फॉर मे बी 3 hours or 4 hours. I agreed to प्रोफेसर पटनायक का प्रपोजल हियर बिकॉज जब भी आप मेरे को यंग लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो आई फील दैट कि मेरे को एक मौका मिला है इनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने का। इसमें से अगर एक का भी मैंने कुछ बता दिया तो आई फील दैट मैंने अपनी जिंदगी का पूरा काम कर दिया। आई ओनली से बाकी सब काम करो। फॉर एग्जाम्पल, रात को अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मोबाइल पे बात करनी है, करिए, कोई तकलीफ नहीं है भाई। बट मैं तो बोलूंगा दम तो तब है जब आप सवेरे 5 बजे उठ के जॉगिंग में जाएं और रात को 2 बजे सोकर। समझ में आया? हम रात को 3 बजे तक मोबाइल में गेम्स खेलेंगे और सवेरे 10:30 बजे तक सोएंगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 2 घंटा मोबाइल एक्स्ट्रा देखूंगा, तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करो, तब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जनरेशन से मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस वक्त जो अच्छा लगा वो करना, दैट इज नॉट द टेक्निक ऑफ लाइफ। रात को पढ़ाई करना,
और रात को मोबाइल देखना इसमें से इजी है मोबाइल देखना, तो आप मोबाइल देखते हैं। दिन में सोना विच इज डिफिकल्ट, दिन में सोना तो आदमी तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन आज से मे बी 20 साल पहले या 25 साल पहले कैन एनीबडी इमेजिन दैट कि सवेरे 10:30 बजे तक कोई सोता है? इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम ओनली वांटिंग टू से इट इज बेसिकली द हैबिट्स व्हिच यू इनकलकेट एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। उसके बाद आपकी तबीयत खराब होगी, तबीयत ठीक होगी, ऑल दोस थिंग्स विल गो ऑन। बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू, एनी प्रोग्राम, दिस स्किल यू आर गेटिंग, कोई भी स्किल आपको मिल रहा है, काइंडली यूटिलाइज दैट। ये मत सोचिए कि पैसे मिल रहे हैं कि नहीं। आई कैन गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। हम लोगों ने बीसीसीएल में वोकेशनल ट्रेनिंग होता है ना, उनको तो ट्रेनिंग दी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, वो लोग मेरे बिल्डिंग के सामने बैठ गए, 140 दिन तक हमको नौकरी देना पड़ेगा। मेरे को वो तकलीफ नहीं है कि वो 140 दिन तक बैठे हैं, मेरे को एक तकलीफ है, एक लड़का जो 23 साल का है 140 दिन तक हम लोग के बिल्डिंग के सामने बैठ के मोबाइल खेल रहा है, तो सोच के देखिए उसकी जिंदगी कितनी खराब होगी। आई कॉल्ड देम, आई टोल्ड देम कि 140 दिन कोई मोबाइल पे खेल सकता है और 140 दिन कोई सो सकता है सामने बैठ के, एंड उसकी जिंदगी कैसे होगी। फाइनली आई कुड प्रिवेल एंड दे वेंट आउट फ्रॉम देयर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं बोलता हूँ आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट लेट एनीवन यू वेस्ट इट। आप तो वेस्ट मत ही करिए, और मैं किसी और को भी आपका लाइफ वेस्ट करने मत दीजिए। कोई अगर बोलता है चलना यार आज शाम को बैठते हैं, तो नहीं मेरे को थोड़ा सा काम, वो पहली बार ना बोलना ही डिफिकल्ट है। और आपको जो ये IIT ISM में जो ये ट्रेनिंग मिल रही है, इस स्किल जो मिल रहा है, आई एम टेलिंग यू, आप आज से 10 साल बाद जब अपने आप से बात करेंगे तो सोचेंगे कि यस, मैंने जो किया था बहुत अच्छा किया, और मैंने जो थोड़ी सी मेहनत की थी मैंने बहुत अच्छा किया। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ, एट द सेम टाइम डोंट वेस्ट योर लाइफ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your kind words. Now we have our special guest from National Skill Development Corporation. Please welcome Shri Mahendra Payal, Senior Program Officer, National Skill Development, on enhancing the employability of youth under scheme of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna and N.S.D.C. sorry. Am I audible, sir? Yeah. Good morning. I am Mahendra Singh Payal, and I am the Chief Program Officer at National Skill Development Corporation. And the National Skill Development Corporation, on behalf of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, has been conducting these programs through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna. Shri Murli Krishna Ramaiya ji, Professor J.K. Patnaik ji, and other dignitaries which are present on the dais, it is my privilege that I am able to participate today in this inaugural session of the second batch, as also witness some of the people from the previous batch who are present here today. I would first and foremost like to thank IIT Dhanbad that they could take this vision of our Honorable Prime Minister and our Honorable Minister, who is a common minister of Ministry of Education and Skill Development and Entrepreneurship, that our vocational education should become part of teaching and education in our reputed institutions. So IIT Dhanbad was one of the first and foremost who took it up. And even more pleasing is that they took up a very niche course, which is generally not taken up in vocational education. So I thank Professor Patnaik and ISM or IIT Dhanbad for that. I remember 1986, long time back, I also wrote an exam for this institute. And today I think I'm happy in some other way I have been associated with this institute today. So all my gratitude and thanks to Professor Patnaik and his team here today.
To the participant, I wish to say that the Skill Hub program is part of National Education 2020, which is seeking to synchronize both vocational education and a normal college or engineering college or university education. And our Honorable Minister has been driving this at least personally in various forums. And I remember the meeting on 9th September this year, where he had called both the secretaries of Ministry of Education and the chairman of AICT, chairman of UGC, and other dignitaries to personally lead the effort of schools and colleges taking up vocational education. And as on today, we have 900 schools which have onboarded for this program, and AICT is approaching about 2,000 colleges, and UGC another 2,000 to 3,000 colleges to participate in the program. So that's wonderful. I also personally, although not a person from this segment, but I would like to share with participants little bit of knowledge which I have or which has come across my domain. I think this field has wonderful future, and I think so because of three things. Firstly, I was little privy to some drone related survey which was being carried out by Survey of India. So you see how this field, because of drone technology, is opening up in the future. I also foresee that because of changing to green and renewable energy, there's a lot of demand for now minerals like nickel, lithium, and others. And even in fact, not only land, the technology is now looking at harvesting nickel from seabed. So the potential for tomorrow is immense. And last but not the least, AI is being continuously now harvested for looking at the places where these precious minerals can be prospected. So these three factors make me believe that you have chosen the right path, and you must consider yourself fortunate that you have been taught by the faculty of ISM Dhanbad. You must also consider yourself fortunate that you could use their labs and infrastructure. So you have been taught by the best in the world, and now it is up to you to harness this knowledge and build on it. And the future looks very bright on that. That is all I have to say, and thank you very much. Thank you so much, sir. Now we would like to felicitate. I want to request our respected director, Professor J.K. Patnaik, to present this to our chief guest, Shri Murali Krishna Ramaiah, Director, BCCL Dhanbad. Now I want to request our respected Deputy Director to present it to our respected Director. Now I want to request our Dean Innovation and Entrepreneurship, IIT in Dhanbad, to present it to our Deputy Director. Now I want to request our head of the department, CD, Professor P.S. Sal, to present it. And finally, Dr. Sunil Kumar, thank you so much.
I would like to call upon Dr. Sunil Kumar, the course coordinator, to propose the vote of thanks. Respected our chief guest, मुरली कृष्णा सर, और अपने ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए हैं पायल साहब, अपने डायरेक्टर प्रोफेसर जेके पटनायक सर, अपने डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार सर, डीन प्रोफेसर ए.के. दास सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर पीएस पॉल सर, और इस सभागार में उपस्थित सभी फैकल्टी, रिसर्च ऑफिसर्स, टेक्निकल ऑफिसर्स और सबसे मेरे प्रिय पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट बैच के भी और सेकंड बैच के भी। सबसे पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स से अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगा कि उनकी योजना के तहत ही ये जो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और पूरे देश भर में जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं और ड्रॉप आउट यूथ्स हैं उनको दी जा रही है, और ऐसा करते हुए लाखों युवा आज इस स्किल को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोअर लेवल पे अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी शुरू हो गई है, और काफी रिक्वेस्ट आ रहा है कि इसको ISM में इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसके अंदर 18 ट्रेड्स हैं, जैसे माली का हो गया, नाई का हो गया, कारपेंटर का हो गया, ऐसे करके 18 ट्रेड्स हैं। उनके स्किल को इंटरनेशनल लेवल पर करने के लिए काफी अच्छा आउटपुट दें, वो भी शुरू हो जाने की संभावना है। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के दौरान मीडिया से आए हुए जितने भी बंधु हमारे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। सबसे इसमें की रोल अपने डिपार्टमेंट से प्लस दूसरे डिपार्टमेंट से भी, जो ये वाला सेकंड पे चल रहा है उसमें रवि, शुभम और कई लोगों ने काफी मदद किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑनलाइन मोड में और लिंक जनरेट करने में अपने मंडल साहब और सौमेन जी ने काफी योगदान दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो मैं ये कहूंगा कि प्रथम बैच में जो लड़के हमारे 90 आए, उसमें से 59 ने रेगुलर अटेंडेंस दे करके एलिजिबल कैंडिडेट पाया। उसमें से भी और कुछ लड़के थे जो कुछ कम हुआ, उनको भी मिल जाने वाला है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने डेडिकेट होकर इतने दिनों तक, 4 महीने तक आपने कोर्स किया, और करीब करीब 40% लड़के कहीं ना कहीं अर्निंग हो गए हैं। 20,000, 22,000, 25,000 का काम करना, मेट्रोज वगैरह में करना शुरू कर दिए हैं। बाकी लड़के के लिए भी अभी एक सप्ताह पहले ही SMDC से फोन आया था, स्किल काउंसिल ऑफ माइनिंग सेक्टर से, कि उन्होंने अपने BCCL के हेड सर को भी रिक्वेस्ट किया है कि इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए। हम होपफुल हैं कि ट्रेनिंग जल्दी मिलनी चाहिए। नए बैच जो आज से ज्वाइन कर लिए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने विश्व में सबसे अच्छे जो माइनिंग का जो इंस्टीट्यूट है उस ऑर्गेनाइजेशन में निःशुल्क आपको करीब करीब 3.5 महीने तक पढ़ने का मौका मिलेगा। और खास करके सर्वेइंग लैब है, इतना रीच लैब है कि इतना रीच लैब, यहाँ 4-4 करोड़ के एक जायरोमेट इंस्ट्रूमेंट है जो और कहीं सामान्य रूप से नहीं है। उस मशीन पर काम करने का आपको मौका मिलेगा, और आपने भी सोच के आया है कि मैं भी 3.5 महीना डेडिकेट होकर के इस कोर्स को करूंगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार के माँ पिताजी को भी बहुत शुभकामनाएं जो आपको इस कार्य के लिए 3.5 महीने के लिए भेजे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रताम पात्रता धनमापनोति धनात् धर्म ततः सुखम, इसको चरितार्थ करते हुए आप विद्या अध्ययन करिए, विद्या लीजिए। हम लोग उसमें पूरा डेडिकेट होकर के आपको देने का कोशिश करेंगे, और इसी के आधार पर जो 4-5 सीरीज है, और आपके सुखमय और खुशमय जीवन की कामना करता हूं ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Before we conclude, let's capture this memorable moment with a group photo at GJLT. Afterward, we'll proceed with the certification distribution. Thank you very much, and I would like to leave now for another meeting.
And thank you very much, sir. Thank you so much, sir. साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। For the session, national anthem.
Thank you so much. Group photo session. फर्स्ट सेकंड थर्ड एएमएस वाले यहाँ आ जाइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड एएमएस आ जाइए और पर आ जाइए।